Let me just check if audio and video and everything is fine. Then I'll proceed. It's fine. Then I'll proceed. Okay, everything is fine. So let us begin. So basically we have already covered like chapter 10, which was about oscillator and contrary ओपिनियन. तो ये चैप्टर था हमारा लास्ट, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. और आज हम 11 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. बुक वही है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. सो चैप्टर नंबर 11 इज पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग. ओके. एंड ऑलमोस्ट एक इस बुक के हम हाफ वे आ चुके हैं. 247 पेज पे हैं हम इसके. सो 247 तक इन्होंने 10 चैप्टर्स कवर किए हैं. टोटल लेंथ है 501. सो स्टार्ट करते हैं. I'll read it out. You can also read along with me, and in between, if I feel like explaining certain things, I'll do it. Otherwise, also, if you guys feel like sharing anything or asking anything, you can do that as well. Alright, so let's begin. Point and figure charting. Introduction. The first charting technique used by stock market traders before the turn of the century was point and figure charting. Okay, the actual name point and figure has been attributed to Victor de Villiers in his 1933 classic, The Point and Figure Method of Anticipating Stock Market Movements. The technique has had various names over the years. In the 1880, so basically they are giving the introduction and telling about the history of this particular method and this particular technique, points and charting, points and figure. The technique has had various names over the years. In the 1880s and 1890s, we'll not focus much on history, we'll just go through it because our main focus is understanding the key terms. टर्म्स को समझने में ज़्यादा फोकस है ना, हिस्ट्री को समझ के क्या ही कर लेंगे. पर ठीक है, थोड़ा सा बेस अगर उससे रिलेटेड आ जाए तो हमको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो, इतना हम लाइक वी विल जस्ट गो थ्रू इट. एक बार हम इसको पढ़ेंगे, जितना आया समझ में ठीक है. टॉपिक जहाँ पे होगा, जहाँ पे मेन कंसेप्ट होगा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. बाकी हिस्ट्री वगैरह से तो जस्ट वी आर गोइंग थ्रू इट. So it is like that. It is known as the book method. This was the name Charles Dow gave it in July 20, 1901, editorial of the Wall Street Journal. 1901, देख रहे हो कितना पुराना मेथड है.
Dow indicated that the book method had been used for about 15 years, giving it a starting date of 1886. The name figure charts was used from the 1920s until 1933 when point and figures became the accepted name for this technique of tracking market movement. R.D. Wyckoff also published several works dealing with the point and figure method in the early 1930s. The Wall Street Journal started publishing daily high, low, and closing stock prices in 1896, which is the first reference to the more commonly known bar chart. Therefore, it appears that the point and figure method predates bar charting by at least 10 years. 10 years. Hmm, great. सो जो बार चार्ट हम आजकल यूज़ करते हैं ना, चाहे कैंडल उसमें हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो बार्स यूज़ होती है, so this method point in charting, it predates bar charting by 10 years, at least 10 years. We are going to approach point and figure charting in two steps. We'll look at the original method that relies on intraday price moves. Then we'll show you a simpler version of point and figure charting that can be constructed by using only the high and low prices of for any market. ठीक है. The point and figure versus the bar chart. Okay, what's the key difference? Let's understand. Let's begin with some of the basic differences between point and figure charting and bar charting and look at a couple of charts example. The point and figure chart is a study of pure price movement. That is to say, it does not take time into consideration while plotting the price action. A bar chart, by contrast, combines both prices and time because of the way the bar chart is constructed. Okay, the point and figure chart is a study of pure price movement. प्राइस मूवमेंट को हम पढ़ रहे हैं किसमें, पॉइंट एंड फिगर वाले केस में. दैट इज टू से इट डज नॉट टेक टाइम इनटू कंसिडरेशन. Okay, while plotting the price action, bar chart by contrast combines both price and time. Okay, so in the case of bar, we are considering time as well because of the way the bar chart is constructed. The vertical axis is the price scale and the horizontal axis is a time scale. On a daily chart, for example, each successive day's price action moves one space or bar to the right. This happens even if prices saw little or no change for that day. Something must always be placed in the next space. On the point and figure chart, only the price changes are recorded. If no price change occurs, the chart is left untouched. During active market periods, a considerable amount of plotting may be required. During quiet market condition, little or no plotting will be needed. So basically point and figure में हम सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बार चार्ट में हम प्राइस के साथ साथ टाइम को भी कंसीडर करते हैं. तो ये बोल रहा है कि अगर प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो पॉइंट एंड फिगर वाले मेथड में हो सकता है कि आपको कुछ प्लॉट ही ना करना पड़े. बट जहाँ पे बार चार्ट की बात आती है उसमें प्राइस में इवन दो मूव नहीं भी हो रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग आपने सेम बार राइट साइड में दोबारा फॉर्म करनी पड़ेगी, just to denote okay the time is also getting changed. So that is the key difference between point and figure and bar chart. In bar chart we are considering price as well as time, but in the case of point and figure chart, we are only considering the price. So अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें प्लॉट करनी पड़े प्राइस पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, बट अगर मार्केट शांत है तो कुछ प्लॉट नहीं करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो एक्सट्रीम वाले केस में चलता है बेसिकली. An important difference is the treatment of volume. Bar chart records volume bars under the day's price action. Point and figure charts ignore volume numbers as a separate entity. This last phrase, as a separate entity, is an important one. Bar chart volume bar को भी record करता है under the day's price action. Point and figure charts ignore volume numbers as a separate entity. This last phrase, as a separate entity, is an important one. Although the volume numbers are not recorded on the point and figure chart, it does not necessarily follow that volume or trading activities is totally lost. On the contrary, since intraday point and figure charts record all price change activity, okay, just wait a second. ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ही हो रही है, मेरा मुंह लाल दिख रहा है. क्या है, लैपटॉप में सही दिखता है और यहाँ पे बिल्कुल, बट दैट डजंट मैटर. बुक पे ध्यान देते हैं. An important difference is the treatment of volume. Bar chart records pass under the day's price action. Point and figures
Charts ignore volume numbers as a separate entity. This last phrase, as a separate entity, is an important one, although the volume numbers are not recorded. ओके सो बेसिकली पॉइंट एंड फिगर वाले केस में हम वॉल्यूम को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, बट जब पॉइंट एंड फिगर ड्रॉ हो रहे होंगे तो प्राइस के बेसिस पे हो रहे हैं, प्राइस में ऑलरेडी वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाता है, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली वॉल्यूम भी शो हो जाता है, इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, because volume is one of the more important ingredient in determining the potency of support and resistance levels. Point and figure charts become especially useful in determining at which price level most of the trading activity took place, and hence ओके पॉइंट एंड फिगर से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही होती है, राइट? जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नंबर होंगे वहीं पे होती है, तो ये हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट. Figure 11.1 compares a bar chart and a point and figure chart covering the same time span. In one sense, the charts look familiar, but in other sense, quite different. The general price and trend picture is captured in both charts, but the method of recording prices is different. Notice in figure 11.2 the alternating column of X's and O's. The X column represents rising price while the O column shows declining price. Each time a column of X's move one box above a previous column of X's, an upside breakout occurs. See arrows in figure 11.2. ओके 11.1 देख लेते हैं पहले. ये कंपैरिजन है, डेली बार चार्ट ये है, लेफ्ट साइड में डेली बार चार्ट है, राइट साइड में आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, राइट? A comparison of a daily bar chart for the S&P 500 index. The point figure uses X columns for rising prices and O columns for declining prices. ठीक है, पॉइंट एंड फिगर में X यूज़ होता है राइजिंग के लिए और O यूज़ होता है डिक्लाइनिंग के लिए. राइजिंग प्राइस होंगे तो X यूज़ होगा और डिक्लाइनिंग प्राइसेस होंगे तो O यूज़ होगा. 11.2 ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट ही है. So a buy signal is given when one X column rises above the top of a previous X column. तो राइजिंग केस में हम X ड्रॉ करते हैं, तो हमने समझ ही लिया ना. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे जब ये वाले X से ऊपर हमारा X चले जाएगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नया टॉप बन गया है, तो यहाँ पे एक बाई सिग्नल मिल सकता है कि प्रीवियस जो X था उसको आप बोल सकते हो ओवर शेडो कर दिया, उससे ओवरकम कर दिया इन सम सेंस. बाई सिग्नल इज गिवन व्हेन X कॉलम राइजेस अबव द टॉप ऑफ द प्रीवियस X कॉलम. सी अप एरोज. तो यहाँ पे से देखो अप एरोज आ रखे हैं ना, ये जो अगला यहाँ से ये वाला X से ऊपर चले गया था X, तो यहाँ से अप एरो आ रखा है, बाई सिग्नल मिल रखा है. सिमिलरली अगर लास्ट X से नीचे चल जाएगा तो वहाँ पे से डाउन एरोज बनेंगे. A sell signal is given when a column of O's falls below a previous O column. ठीक है, अगर लास्ट O से नीचे अगला O बनता है तो वहाँ पे सेल सिग्नल बनेगा. सी डाउन एरोज. डाउन एरोज वाले केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है. ये वाला है देखो, ये पूरा X है, ये वाला O है, तो ये वाला O यहाँ पे इसके नीचे जो अगला वाला था वो नीचे बन गया, तो यहाँ से एक सेल सिग्नल मिला और मार्केट और नीचे गया, प्राइस में और नीचे की तरफ मूव आया, ठीक है. सिग्नल्स आर मोर प्रिसाइज ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स. ठीक है, बाहर के कंपैरिजन में सिग्नल ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में, ऐसा बोल रहे हैं. Correspondingly, when a column of O's declines, one box under a previous column of O's
ठीक है, तो बार चार्ट के कंपैरिजन में जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है उसमें प्रिसीजन बेटर होता है और आसानी से ट्रेंड सिग्नल आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. Figure 11.3 and 11.4 reveal another major advantage of the. The larger the number of boxes required for a reversal, the less sensitive the chart becomes. ठीक है, जितने ज़्यादा boxes लगेंगे उतना ज़्यादा कम sensitive होगा chart. The second way to vary the chart is to change the box size. Figure 2 uses a box size of 5 points. Figure 11.3 changes the box size from 5 points to 10 points. The number of columns has been reduced from 44 in the 5 into 3 chart in वगैरह. देख लेते हैं, डायग्राम ही देख लेते हैं ना. ये 11.3 है boxes and columns के फॉर्म में. Increasing the box size from 5 points to 10 makes the point and figure chart less sensitive. अगर आप बॉक्स साइज को 5 से बढ़ा के 10 कर दोगे तो ये कम सेंसिटिव हो जाएगा और कम सिग्नल देगा, फ्यूअर सिग्नल्स देगा. दिस इज़ मोर सूटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल अप्रोच है कि बॉक्स साइज आपने बढ़ा दिया है. ओके, 11.4 में क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग द बॉक्स साइज. देखो सीधे आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो बॉक्स का साइज देखो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, और यहाँ पे बॉक्स का साइज देखो. यहाँ पे हमने बॉक्स का साइज कम कर दिया है. सो रिड्यूसिंग द बॉक्स साइज टू 3 पॉइंट्स प्रोड्यूसेस मोर सिग्नल. यहाँ पे आपको ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे. सिग्नल कब मिलेंगे? देखो जब एक एक्स से ऊपर दूसरा एक्स जाएगा तो हमारे पास बाई सिग्नल मिलेगा, यानी कि हम यहाँ से लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं. अगर एक ओ से नीचे अगला लो चले जाएगा तो यहाँ से हमको सेल सिग्नल मिलेगा, यानी कि हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं. तो यही तो सिग्नल है. देखो छोटे बॉक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए सिग्नल ज़्यादा जनरेट करेगा. तो ये शॉर्टर टाइम पीरियड में ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा एप्ट है. बट अगर हम बड़ा साइज यूज़ करेंगे तो उसमें ये सिग्नल्स कम जनरेट होंगे, तो वहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वो बेटर है. रिड्यूसिंग द बॉक्स साइज टू 3 पॉइंट्स प्रोड्यूसेस मोर सिग्नल. दिस इज बेटर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेटर है. द लास्ट रैली फ्रॉम 920 टू 1060 produced 6 different buy signals. Protective sell stops can be placed under the highest column of O's. See S1 to S5. S1 to S5. यह S5 ये S1 है. ठीक है, यहाँ से बाई सिग्नल बहुत सारे मिले. ओके, मेक सेंस. Now let's go through the theory once again. Reveal another major advantage of the point and figure chart: flexibility. While all three of the PNF charts cover the same price action, we can make them look very different to serve different purposes. One way to change the PNF chart is to vary the reversal criteria. Let's say from 3 box reversal to a 5 box reversal. The larger the number of boxes required for a reversal, the less sensitive the chart becomes. The second way to vary the chart is to change the box size. Figure 2 uses a box size of 5 points. Figure 11.3 changes the box size from 5 points to 10 points. The number of columns has been reduced from 44 in the 5 into 3 chart in figure 11.2 to only 16 column in figure 11.3.
By using the larger box in figure 11.3 fewer signals are given. तो बॉक्स साइज हमने जितना बढ़ाया तो वहाँ पे कम सिग्नल जनरेट होंगे, कम बाय या सेल सिग्नल मिलेंगे. That allows an investor to concentrate on the major trend of a market by avoiding all the short term signals that are eliminated from the less sensitive chart. Okay, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाला केस, ऐसा बोल रहे हैं. Figure 11.4 reduces the box size from 5 to 3. That increases the sensitivity of the chart. ज़्यादा sensitive होगा तो ज़्यादा signal produce करेगा. Why would anyone want to do that? Because it's better for short term trading. Compare the last rally from 920 to 1060 in all three charts. The 10 into 3 chart figure 11.3 shows the last column as a series of X's with no O column. The 5 cross 3 chart 11.2 shows the last up leg in 5 columns, 3 into columns and 3x columns and 2 O columns. The 3 into 3 chart figure 11.4 breaks the last up leg into 11 columns but 6 columns and 5 columns by increasing. तो just यही है, देखो, by increasing the number of correction during the uptrend, by increasing the number of columns, more repeated buy signals are given either for later entry or for adding to winning position. तो जितना आप बॉक्स का साइज बढ़ाओगे उतना कम सिग्नल जनरेट होंगे, जितना बॉक्स का साइज कम करोगे उतने ज़्यादा सिग्नल जनरेट होंगे. इट ऑल्सो अलाउज द ट्रेडर टू रेज प्रोडक्टिव सेल स्टॉप्स. कोई भी अप्रोच गलत नहीं है. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बॉक्स साइज कम होगा तो ज़्यादा सिग्नल जनरेट होंगे, वो ज़्यादा बेटर है. बट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग के केस में आप बोलोगे कि कम सिग्नल अगर जनरेट होंगे तो आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे किस चीज़ में. यू विल फोकस मोर ऑन दी ट्रेंड. लाइक ट्रेंड के बेसिस पे आपको कम सिग्नल जनरेट होंगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. इट ऑल्सो अलाउज द ट्रेडर टू रेज प्रोडक्टिव सेल स्टॉप्स बिलो द लास्ट कॉलम ऑफ ओज. द बॉटम लाइन, जैसे होता नहीं है कि कहीं पे हमने एंट्री बनाई तो उससे प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो को हम एस एल लेके चल जाते हैं, राइट, स्टॉप लॉस लेके चले जाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है कि स्टॉप्स बिलो द लेटेस्ट कॉलम्स ऑफ ओज, उसके नीचे अगर आप रखोगे तो वो आपका सेल ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा. मतलब ठीक है, आपका रिस्क मेंटेन रहेगा. द बॉटम लाइन इज दैट यू कैन ऑल्टर द लुक टू द पॉइंट एंड फिगर चार्ट टू एडजस्ट इट्स सेंसिटिविटी टू सूट योर ओन नीड्स. तो अपनी नीड्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये इसका जस्ट है. 11.2 फिगर हमने देख लिया था ना, ये वाला देखो. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइज कंपेरेटिवली छोटा है तो ज़्यादा सेल सिग्नल्स या बाई सिग्नल जनरेट हो रहे हैं. एरो जो है ये आपका सिग्नल ही जनरेट कर रही है, ये वाला. यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी, कहीं पे बाई कहीं पे सेल है बट सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं ज़्यादा कंपेरेटिवली. ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है सिग्नल जनरेट होने की. इसके अपोजिट जो नेक्स्ट वाला है, देखो यहाँ पे लास्ट वाले के कंपेरिजन में टोटल अगर नंबर ऑफ सिग्नल देखूंगा मैं तो 3 दूनी 6, 6 ही सिग्नल है. और यहाँ देखो जब बॉक्स साइज छोटा था तो कितने सिग्नल्स हैं, ऑलमोस्ट 10, अप्रोक्सीमेटली 10 सिग्नल्स हैं. तो कम साइज में ज़्यादा सिग्नल जनरेट होंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरडे पॉइंट एंड फिगर चार्ट, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है लेट्स अंडरस्टैंड. We have already stated that the intraday chart was the original type used by point and figure and chartists. The technique was originally used to track stock market movement. Just give me 1 second.
Okay. कैसे प्लॉट करते हैं वो बताया जा रहा है, तो ठीक है, वी आर आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक लॉजिक समझ में आ जा रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने तो क्या करना है, सिर्फ लिखना है कि ये वाला इंडिकेटर लगा दो और वो लगा देता है। हमको ये पता होना चाहिए कि वो इंडिकेटर क्या काम करता है, कैसे वो सिग्नल जनरेट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कैसे एक्स काम करते, कैसे ओस काम करते, कहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट होता है, कहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, वो हम समझ गए हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे उसको प्लॉट करते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट ताकि एक रफ आइडिया माइंड में आ जाए, बट इतना आर्डेंटली फॉलो नहीं करना है कि हाँ बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। Put a dot at 4875 because the next number 4880 is higher. Fill in the next box up to 4880. The next number is 4860. Move one column to the right, go down one box and fill in. Okay. तो जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है वहाँ पे x लिख दे रहे हैं हम, जहाँ पे नीचे जा रहा है वहाँ पे o से डिनोट कर रहे हैं। Stop here. So far you have only one x marked in column 3 because prices have only moved up one box. On one box reversal chart, there must always be at least two boxes filled in each column. Notice that the next number is 4850. Calling for O's down to that number. Do you go to the next column to record the column of declining O's? The answer is no, because that would leave only one mark, the X in column 3. Therefore, in the column with the lone X, fill in O's down to 4850. तो ये यहाँ पे डिनोट करके दिखाया गया। अब 5 × 1 point and figure chart of it. Yes. Okay, so this is some market kind of situation, I guess. The blackened boxes show the end of each day in trading. Alright, ये वाला each tray, ये वाले blackened boxes एंड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर 11.5 ए ये तो ऊपर है। फिगर 11.5 बी shows the same price data with a 3 box reversal। यहाँ पे हम 1 box reversal देख रहे थे ना, और 11.5 सी में 5 box reversal है। Column 4 the number is 4860. Move to the next column, move one box up and plot
x up to 4860. Next number is 4855, which is lower than 4860, so here we'll have one O. Go to the next column, move down a box and fill the O at 4860. Notice on the table that this is the last price of the day. Let's do one more. The first number on 5 by 2 is 4870. So far you only have one O in column 5. You must have at least 2 marks in each column. Therefore fill in X's because prices are advancing up to 4870. But notice that the last price the previous day is blacked out. This is to help keep track of time. By blacking in the last price day, it is much easier to keep track of. Okay, makes sense. Feel free to continue through the remainder of the chapter. Reminder of the chart to sharpen your understanding of the plotting process. Noted, Notice that this chart has several columns where both X's and O's are present. This situation will only develop on the 1 point reversal chart and is caused by the necessity of having at least 2 boxes filled in each column. Some purists might argue with combining the X's and O's. Experience will show, however, that this method of plotting prices make it much easier to follow the order of the transactions. Figure 11.5b takes the same data from figure 11.5a and transform it into a 3 box reversal chart. Notice that the chart is condensed and a lot of data is lost. Figure 11.5c shows a 5 box reversal. These are the 3 reversal criteria that have additionally been used. The 1 3 5 box reversal. The 1 box reversal is generally used for very short term activity at the 3 box, and the 3 box study for the intermediate trend. The 5 box reversal, because its severe condensation, is generally used for the study of long term trends. The correct order to use is the one shown here, that is begin with 1 point reversal chart. The 3 and 5 box reversal can then be constructed right off the first chart for obvious reasons. A 1 point reversal chart could not possibly be constructed from a 3 or 5 box reversal. Makes sense. 11.5b जिसमें हमने 3 बॉक्स यूज़ करा है और 11.5c जहाँ पे हमने 5 बॉक्स यूज़ करा है, तो ज़्यादा डाटा को कम में डिनोट कर रहा है, यानी कि बीच का कुछ डेटा मिस भी हो जा रहा है जितना जितना हम बॉक्स साइज पढ़ा रहे हैं. The horizontal count. One principal advantage of the intraday 1 box reversal chart is the ability to obtain price objectives through use of horizontal count. If you think back to our coverage of bar charts and price patterns, the question of price objectives was discussed. However, virtually all methods of obtaining price objectives of bar charts were based on what we call vertical measurements. This meant measuring the height of a pattern, the volatility, and projecting the distance upward or downward. For example, the head and shoulder pattern measured the distance from the head to the neckline and swung that objective from the back of that neckline. So ज़्यादातर केस में हम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करके इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट यहाँ पे हम हॉरिजेंटल को लेके चल रहे हैं. पॉइंट एंड फिगर चार्ट अलाउज हॉरिजेंटल मूवमेंट measurement as well. The principle of the horizontal count is based on the premise that there is direct relationship between the width of a congestion area and the subsequent move on a breakout once a breakout occurs. किस किस के बीच में रिलेशन है? width of a congestion area and the move once subsequent move once a breakout occurs. If the congestion area represents a basing pattern, some estimate can be made of the upside potential once the base is completed. Once the uptrend has begun, subsequent congestion areas can be used to obtain additional counts, which can oh, wait a second. Am I stuck or what? No, I'm not. Alright. Once the base completed, once the uptrend has begun, subsequent congestion areas can be used to obtain additional count, which can be utilized to confirm the original count from the base. ठीक है, ये complete कर लेते हैं. The intent is to measure the width of the pattern. Remember, okay.
Once the uptrend has begun, subsequent congestion area can be used to obtain additional counts, which can be utilized to confirm the original count from the base. The intent is to measure the width of the pattern. Remember, we are talking here of intraday one box reversal charts. The technique requires some modification for other types of charts that will come back to later. Once a topping or basing area has been identified, simply count the number of columns in that top or base. If there are 20 columns, for example, the upside or downside target would be 20 boxes from the measuring point. The key is to determine which line to measure from. Sometimes this is easy and other times it's more difficult. Usually the horizontal line to count across is near the middle of the congestion area. A more precise rule is to use the line that has the least number of empty boxes in it, or put the other way, the line with the most number of filled in X's and O's. Once you find the correct line to count across, it is important that you include every column in your count, even the ones that are empty. Count the number of columns in the congestion area and then project that number up or down from the line that was used for the count. By counting the numbers of columns across the horizontal congestion area, price objective can be determined. Counting the number of columns across the horizontal congestion area. हॉरिजेंटल जो कंजेशन एरिया है आपका, यहाँ पे अगर आप कॉलम्स को काउंट कर लोगे, सो यहाँ पे देखो एरो से डिनोट हो रहा है, तो वो आपको प्राइस ऑब्जेक्टिव समझने में हेल्प करेगा. द वाइडर द कंजेशन एरिया द ग्रेटर द ऑब्जेक्टिव. तो जितना ज़्यादा कंजेशन एरिया होगा उतना ज़्यादा प्राइस का ऑब्जेक्टिव होगा. ये आपने समझना है. 255 price pattern, we'll cover it in the next live. So if you are into stock market and finance and anything related to that like trading and investing or whatever, if you have interest in these things, अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग वगैरह, तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि वैल्यू ऐड होती है, you can subscribe to the channel and you can like the live stream as well. So yes, we'll meet next time. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharan ji. Have fun. Peace out. We'll start from page number 256, which is price patterns. We have covered till 255. Alright, so have fun. Okay, I don't want it like that. Cool. Now I'll have to add doc.